Assalamualaikum class 5, this is Khalid Salim and I hope that all of you are well. So in our previous lecture we started chapter number 2, Ocean and Seas, and we read a little bit of that chapter. So it was just an introduction on the importance of water for living things, and then we studied how water actually um came into being on this planet Earth, and there were rains that lasted for millions of years, and then that rainwater it actually settled into huge pits that were found on the Earth's surface, and eventually they formed oceans. Then we studied that 70% of the ocean is, 70% of the Earth's surface is composed of oceans, and only 30% is livable. And then we studied that the 95, I guess, yes, 97% of the water that exists on Earth is found in oceans, but this water is not drinkable. And only 2.5% of the global water supply is drinkable, and it comes from lakes, springs, it comes from rain, and glaciers as well, rivers as well. So today we are going to continue on with the rest of the chapter. So let's start with the reading first. Seawater has different temperatures, depth and content of minerals and salts. सो सी वाटर जो है उसके डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं. अब सी वाटर की डेप्थ भी जो है वो डिफरेंट होती है, और इसके अंदर जो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स पाए जाते हैं उनका जो कंटेंट है वो भी डिफर करता है एक दूसरे से. The bed of the sea is a composition of rock, plants, granite and ballistic rock layers. तो जो सबसे नीचे वाली जो सरफेस है सी की, जिसे हम बेड ऑफ द सी कहते हैं, अब ये बना किस चीज़ से है? ये रॉक से बना हुआ है, ठीक है. प्लांट्स हैं, ग्रेनाइट है. ग्रेनाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ रॉक, ठीक है. जब ये मैग्मा रिलीज होता है तो जब ये कूल डाउन होता है तो वो फॉर्म करता है. एंड ballistic rock layers. Okay. So we know now about the composition of the seabed: plants, rocks, granite, and ballistic rock layers. Okay, winds moving across the surface of the ocean and seas cause formations of waves. So how waves are formed? When the wind is blowing on the surface of the sea, so waves are formed in this way. Okay, the next part is uh, tides. Okay, so tides are changes in the water level of the सी. अब टाइड्स क्या होते हैं? ये वाटर लेवल कभी सी का इंक्रीज कर जाता है, कभी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है. वाई डज दिस हैपन? वी आर गोइंग टू रीड इट ऑन. द मूवमेंट ऑफ द टाइड इज रिलेटिव टू द सनराइज एंड सनसेट. तो अब मूवमेंट ऑफ द टाइड है, मतलब टाइड कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, तो ये रिलेटिव है टू सनराइज एंड सनसेट, मतलब इट्स रिलेटेड टू सनराइज एंड सनसेट. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सनराइज हो रहा है, देन यू आर गोइंग टू हैव low tide, ठीक है. The water levels in the sea, the water level of the sea would decrease when there is sunrise, ठीक है. और जैसे ही when you're having uh, you can say night time and the moon rises, then you're going to notice that the water level of the sea has risen, ठीक है. सो अब यहाँ पे हाई टाइड पे क्या होता है कि वाटर जो है लेवल जो है सीज का वो राइज कर जाता है, ठीक है. तो लो राइट इट हैपन्स व्हेन देयर इज सनसेट, एंड हाई टाइड हैपन्स एट द टाइम ऑफ द नाइट. ओके, सो मूवमेंट ऑफ द टाइड जो है वो रिलेटिव है सनराइज के और सनसेट के. Tides are the rise and fall of water of the earth produced by the gravitational attraction of the moon and sun. तो tide जो basically क्या है? It is the rise and fall of water of the earth, जो कि produce की जाती हैं by the gravitational pull of the sun and moon. अब definitely अब हमारी on earth जो है वो gravity है, everything is down on the ground, we are not flying up in the air. सो अब अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसी तरह अगर आप सन लें तो सन की भी कोई ग्रेविटी है, क्योंकि आपको पता है कि
अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रही है। तो what is holding the earth in its orbit is the fact that sun is having some sort of a gravitational pull that keeps attracting the earth towards it, ठीक है। लेकिन अर्थ जो है वो स्पीड से स्पिन कर रही होती है and it is also having its own speed, so that is why it just maintains the same orbit that it has maintained for a very long time. इसी तरह about the moon is also having a little bit of gravity, but it's not that strong, but the effects of that gravity they can be noticed by uh, looking at the phenomena of tides that occur in our seas and oceans. So tides are the rise and fall of water produced by the gravitational attraction of the moon and sun. Okay, they are also affected by the rotation of the earth. So not only these two factors are contributing to the high tide and the low tide that is happening in our seas and oceans. So लेकिन सीज होगा, क्योंकि टाइड आप तभी नोटिस करते हैं जब आपके पास सी जो है बेसिकली बॉडी ऑफ वाटर होती है जो नियर लैंड होती है, ठीक है। ओके, लेकिन ये क्या है कि अर्थ भी आपको पता है इट्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ये जो रात और दिन का जो फिनोमिना है इट इज़ अकरिंग बिकॉज द अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। सो दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो प्लेज some part in the movement of you can say in this phenomena of tide. The movement of the moon in its orbit also accelerates the gravitational pull in successive low and high tides. अब definitely moon जो है it's also orbiting around the earth. So ये भी जो है accelerate का मतलब होता है speed up कर देना, किसी चीज़ को speed up कर देना। सो अर्थ जो मून की जो अपनी मूवमेंट है इन इट्स ऑर्बिट, इट ऑल्सो स्पीड्स अप द ग्रेविटेशनल पुल, अपनी पुल जो है उसको स्पीड अप करता है, रिजल्टिंग इन सक्सेसिव लो एंड हाई टाइड्स। तो इससे क्या होता है कि सक्सेसिव का मतलब होता है कि कॉन्जेक्यूटिव, एक के बाद एक आना। सो this phenomena is not one time, rather you would notice it every time if you go by the sea, and if you're present during the day you would see that it is having a low tide, take it, and if you're present during the night you would see that the water level has risen. Okay, the tides are measured by a tide gauge. So definitely if you want to measure the level of the water in the sea, especially during the times of the tide, then you're going to use this instrument called tide gauge, ठीक है। हमारे पास एक डिवाइस होती है टाइड गेज, उससे जो है हम टाइड की मेजर करते हैं कि ये इस वक्त टाइड जो है वो लो टाइड है तो पानी कितना नीचे चला गया है, और इस वक्त हमारे पास हाई टाइड है तो पानी कितना रेज अप हुआ है। So I hope that you have a good understanding about this concept of tides, ठीक है। So this is also included as a question in your exercise. So inshallah I'll be sending the answer of it to you. Okay, now let's read a little bit. Okay, now we are going to study about the oceans. Okay, there are 5 great oceans in the world. So अगर अर्थ में हम लोग देखें तो हमारे पास 5 जो हैं वो ओशंस है। ओशंस जो है वो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होती है, ठीक है, बहुत लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ओके, द फर्स्ट ओशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज द पैसिफिक ओशन। ओके, द पैसिफिक ओशन लाइज बिटवीन द एशियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। So where is this ocean located? It is located between the Asian and the American continent, ठीक है। Let me briefly show you. I guess yes, they have given it. So as you can see, this is Russia, okay, and this is China, this is Japan, and this is Canada, and this is United States. तो ये एशियन कॉन्टिनेंट है और ये जो है आपका this is your American continent. Okay, so this body of water here is known as the Pacific Ocean. Okay, it is the largest and deepest ocean in the world. तो सबसे बड़ा है ओशन और सबसे डीप भी है, covering 63.8 million square miles. That is approximately, if you convert it into kilometers, 165.2 million square kilometers. Okay, it is 6 miles 11 kilometers deep near Mariana Islands. So you can see that it covers approximately 63.8 million square miles, and its depth is 6 miles or 11 kilometers near the Mariana Islands.
ईस्ट ऑफ द फिलीपाइंस। तो सबसे ज़्यादा जो गहरा इसका अगर आपने पैसिफिक ओशन का देखना है तो ये फिलीपाइंस के ये आइलैंड यहाँ पे भी मेंशन हुए हुए हैं, ठीक है। तो इसके ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट बनता है इनका। तो यहाँ पे मैरियाना आइलैंड है और यहाँ पे सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है ना पैसिफिक ओशन का, दैट इज़ 11 किलोमीटर डीप। द पैसिफिक हैज़ मैनी स्मॉल आइलैंड्स। अब डेफिनेटली पैसिफिक ओशन में जो है ना बहुत छोटे छोटे जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं। Vasco Nunez de Balboa was the first European to view the Pacific Ocean in 1513. So he was the first European who viewed, जिसने देखा Pacific Ocean in the year 1513, and his name was Vasco Nunez de Balboa. Okay. Then a Portuguese sailor, Ferdinand Magellan, became the first one to sail across it in 1521. So the first person to sail across, who actually crossed Pacific Ocean, was a Portuguese sailor, okay, and his name was Ferdinand Magellan, and he sailed it in 1521. He named it he named it Pacific for its peaceful nature. अब इसका नाम कैसे पड़ा? The origin of the name of the Pacific Ocean uh, is in the fact that he considered that this ocean was very peaceful. मतलब उसको कोई तूफ़ान वगैरह उसने इनकाउंटर नहीं किया है, कोई रफ़ वेदर उसने इस ओशन के अंदर इनकाउंटर नहीं किया। तो इसने इसका पीसफुल नेचर की बेसिस पे जो है इसको नेम पैसिफिक कर दिया। He sailed from Saint to Legazpi in the Philippines. अब इसने क्या किया कि स्पेन से लिगैस्पी पे फिलीपाइंस तक उसने कश्ती चलाई, क्रॉसिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका एट केप हॉर्न। और साउथ अमेरिका का उसने क्रॉस किया कॉन्टिनेंट एट केप हॉर्न। So this is just additional information that the author of this book has given us. But the point to remember is the length of the Pacific, that is 68.8 million square miles, and also the deepest point. Take care. The deepest point of this ocean lies near Mariana Islands, that is in the east of the Philippines, and its depth is about 11 kilometers or 8 miles. And Vasco Nunez de Balboa, he was the first European who actually viewed this Pacific Ocean in 1513. And the first European who was a Portuguese sailor, he was named Ferdinand Magellan, and he actually sailed across this great ocean in 1521. Okay, and he named Pacific for its peaceful nature. So these are the things that you need to actually learn. So today we have covered the composition of the bed of the sea, okay, the composition of the seabed. Then we studied about how waves are formed, okay, when the winds they are blowing over the surface of the sea, okay, the sea or the ocean, they actually form waves because of it. And lastly we studied tides. That tides is a natural phenomena, and uh, they actually increase or decrease the levels of the water of the sea. And the influence uh, that occurs upon these tides is the influence of the gravitational pull of the moon and the sun. And during the daytime you would be having a low tide, and during night time you would be having a high tide. Okay, so this is what we have studied. And then we began reading about the 5 great oceans of the world, and we just finished the reading of the Pacific Ocean. So I hope that you have understood it quite well, and inshallah I'll be sending you 2 question answers related to this chapter. Thank you.